So, hi everyone, welcome to Networkings. If I'm audible, say yes in the chat. Okay, so great to see you all here. So, let's discuss what we are. So, we are starting our phase one batch today. Okay, so this will be the day one. And what is day one? So, it means we are going to officially start this batch today. Okay, so we will not extend this batch. Already the batch is finalized, and I'm sure many of you were waiting, but today we are announcing our day one. Okay, so what is the agenda for today's class? So those who do not know what is phase one, so phase one is a program at Networkings where we make people career into IT. Okay, so phase one is a combo of CCNA, MCSA, and Linux. Okay, but as of now, this month we are starting CCN and MCSA. So maybe after 10-15 days we will start Linux. But those who are interested in phase one, they can directly join the CCNA MCSA. Okay, so CCNA is a course, is a certification from Cisco, and MCSA is a certification from Microsoft. Okay, and additionally, like all the courses, you will get the lab access. So what I recommend you, like at least for today or maybe tomorrow, try to attend the session to understand more about IT. So this course for non coders, those who do not want to learn the coding and they want to actually earn a good salary in IT. Okay, so after this phase one, you can apply a job as a network engineer. Okay, you can apply as a system engineer, cloud engineer. Okay, so we do not have to learn any coding like C, C++, Java and all. Okay, maybe 10-20% we have to learn when we will go into some network automation, but only 10-20% in network programming. Okay, but rest, if you ask me, sir, this program, if I do not like coding, this will be best. Yes, this program will be best for those who do not want to become a coder. Okay, this is a known coding IT career, you can say that, and it has very good salaries in the market also. Okay, so in simple short, what is the agenda for today? So we Satish is with us. Okay, Satish has almost 11 years of experience. Okay, so he's going to take care of Windows servers. Okay, so those who do not know one Windows server, so Satish is going to explain you by showing some basic practical also. Okay, don't worry if you do not understand today. We will help you. We will all like after you join this course, there is a discussion portal also. You can clear your doubts also in the discussion forum. Okay, and this batch is going to be around 2 months, and the timing would be Monday to Friday. Okay, as of now, this batch timing is 8 p.m. to 9:30 p.m. Okay, so after this class, like I have my another class which is CCNA, okay, which is Cisco Certified Network Associate. You can ask your doubts, and same we will have the discussion forum. This batch is 50 hours approx, 50 to 55 hours. CCNA is also 50 to 60 hours live classes. Okay, approx 2 months class. Additionally, Monday to Friday, and the timing Monday to Friday. This is best for USA, Canada, and best for those who are working professional. The timing is 10 p.m. Sorry, I'm just going in my flow. 10 p.m. to 11:30 p.m. Okay. So we'll try to close sometimes 11:15 also. I know 11:30 is little late, but see, if anybody is really interested and they really want to do these courses properly, so I think night timing is the best, because at that time you are not disturbed. You can focus on these courses. Okay. So just it is a matter of 2 months. You can add these skills in your resume. Just understand when these skills will be added into your resume. Okay, these courses will be added into your resume. You will be going to definitely get a job in market. Okay. I recommend, if anybody do not have job, so I recommend this complete course which is called phase one. Okay,
but those who are not willing to take the full course of phase 1, they can enroll in either in MCSA or CCNA, or you can take 2 courses also. That's again your choice. Okay. Okay. So now what we are announcing, like we are announcing a thing which is called NK Prime. So those who join our batches, we are starting our NK Prime membership. Okay. So what is this? This is 6 months membership. This is 6 months membership, and we are not charging too much, only 1,000 rupees for NK Prime. You can call this 6 months. We are charging 6,000 INR. Okay, approx 100 USD. Okay, so if you ask me, so what we are going to do, but this majorly focus on India right now. Okay, so here we will make you prepare for all your communication. Okay, like if you are weak at English, or you want to improve your comm skills, we will help you up to 6 months. We will try to arrange a lot of interviews. We will track your progress. Okay, we will track your progress. We will help you, and we will keep giving you feedback, track progress of your courses as well, your comm skills, and we will also arrange interviews for you. Okay, so we have good hiring, and many companies are hiring from us, but again we do not give any job percent guarantee or 100% job guarantee, because that is a fake commitment. If you are good at very good, like if you have good skills, then definitely you are going to get a job. Okay, so this membership, who is joining CCNA or only MCSA or only Linux, okay, so they can take this membership separately. But if you are joining the phase 1 program, those who are joining the phase 1 program, so this membership is complimentary for these guys. Okay, not just phase 1 program. If you join our phase 2, or you also join our CCNA CCNP combo, so this membership will be there for you, and we will try to help you as much we can to get your job. Is this clear, everyone? Okay, so I'm just sharing few insights. Like you can check our community page. There are many students who got a job with the help of networkings. Whenever you get time, I can't show you all 100 posts. Okay, but you can keep checking. And belated Ganesh Chaturthi, guys. So yeah, so many guys are getting certified, and additionally last time also I've shown you that people are getting jobs. So you can check this community section, those who actually want to see the networking's result. Okay, so here is the link, those who want to see the community section. Additionally, like we are sending resumes to many good companies, not just the normal companies. We try to place you at very good company, but again I am saying we do not give any job guarantees, because job guarantee we can't give you until unless you will prepare properly. We can help you, only we are charging 1,000 rupees, and as of now this is only for the internal students. Okay, those who are joining networkings. But if you comment on this video, we will also plan this for external, those who are doing courses but they are not getting value outside, or maybe they want to improve their comm skills. So we can plan this for external, but definitely this membership may be have some difference, maybe 200 USD, approx 10,000 for outsiders. Okay, because obviously we are little partial with our students, because they trusted networkings and they are doing courses from us. Okay, but if you comment on this video, so we will also plan this NK Prime membership for you all also. Okay, so we will explain this NK Prime in a separate video, maybe by tomorrow or maybe day after tomorrow. I will create a separate session, what are the benefits of NK Prime. Like for every future course you may be getting 15 to 20% discount also in this membership. Okay, also lab access. Okay, here we are going to create some groups also. So so it's better I'll explain this in a different video. So let's start our MCSA program. Okay, so over to you, Satish.
I'll meet you guys at 10 p.m. Okay, in the same Zoom ID. But if you are watching this on YouTube, like I recommend you to join the Zoom ID. So let me share a link with you all. Satish, are you there? Yes, I'm here. Am I Yeah, audible? so yes, yes. Okay, so you can share your screen. Yeah. All right. Thank you, Atul. So let me share my screen. All right. Good evening, everyone. So let me share the presentation. All right. So before we start, let me introduce myself. So my name is Satish Kumar, and I'm an IT professional. I have around 8 years of experience in IT industry. So I worked in different roles. I worked as a help desk. I worked as a system administrator, and I'm currently working as a IT infrastructure admin. So in total, I worked with 4 different companies. So I have a variety of experience with different companies, how their infrastructure is built and how all the things are managed in each companies, and what are the different technologies you will be able to see in different companies. So if I talk about my qualification, so I am Windows Server 2016 MCSA certified, and also along with that, I am trained professional on Microsoft Exchange, Office 365, Azure, and VMware. So let's start with the agenda. Before we start learning anything, we need to understand the infrastructure, right? So let's consider this is your company, right? Uh, Satish, so you can blend some Hindi also. I'm just so let others, those who are comfortable in Hindi also. So we will speak everything in English, guys. yeah, But yes, to make it more easy for you, we will also say those things in Hindi. So the guys who do not understand Hindi, do not worry, guys. We are going to complete speak in English. But the guys who just want to listen one or two few lines in Hindi, so we are going to say those also. Okay. तो जिनको हिंदी समझ आ रहा है ना, तो उनके लिए हम थोड़ा बीच में बोलेंगे ताकि आपको पूरा अच्छे से समझ आ जाए. ओके. ओके या सतीश. sure. Basically, I just introduced myself. So now let's start with the infrastructure introduction. So as I said, let's consider that you are working for a company, or you start managing a company, or let's say this is a company XYZ, right? So in this company, you will be having a lot of computers, right? And each of these computers will be used by the users, right? These computers can be like desktop computers, or it can be laptop, or sometime the upper management team, they might be using phones as well, right? So these days our cell phones or the smartphones are becoming more and more popular, and quite of different things we can do through phones as well. So if you look this infrastructure, there is an internet connection. After that internet connection, I have configured a firewall. Let me just mark these things and let me show it. So if you look, this is the firewall which is connected to internet, right? After this firewall, I have a network switch connected. And after that switch, I have connected a access point, right? So this is a common network which I have created. And after that network, I have three sort of different devices. One is desktop, then laptops, and a cell phone. So these desktops are connected with wires through that switch, and these laptops are connected using wireless, right? And the same goes with phone. So हो क्या रहा है इस इंफ्रास्ट्रक्चर में, ये सारे के सारे जो कंप्यूटर्स हैं वो नेटवर्क में हैं, राइट? व्हाई दे आर ऑन नेटवर्क? बिकॉज इन सबको जो है वो
डेटा और जो इंफॉर्मेशन है वो शेयर करनी होगी दूसरों से, ठीक है, और इनको इंटरनेट कनेक्टिविटी भी चाहिए. सो दैट इज व्हाई दे ऑल आर कनेक्टेड टू this network. Now let's understand what is the problem with this network. This network is known as peer-to-peer, or we call it unorganized infrastructure. Why this is unorganized, why I'm calling it unorganized? Because if you let's say a user called Rahul, he wants to log into this computer. So first of all, there must be an account created for Rahul, then only he can log into this computer, right? Next day, the Rahul cannot log into this computer, or he cannot log into this computer or any other computers, right? That is the problem. Again, if Rahul created a file on this computer and by chance something happened to this computer, or if Rahul wants to share that file with some other person in the same company, how he can do that? Either he has to manage the sharing, or this is almost very difficult in the peer-to-peer or in this kind of infrastructure, because there is no central source where we can manage all these things. So बोलने का मतलब क्या है कि अगर आप एक नॉर्मल कंप्यूटर की बात करते हो जो इस इंफ्रास्ट्रक्चर में, जैसे अगर आप अपने घर की कंप्यूटर की बात करते हो, ठीक है, आप लोगों के पास भी कंप्यूटर होंगे, तो अगर आप उस कंप्यूटर पे यूजर अकाउंट बनाते हो तो आपको वही यूजर अकाउंट से लॉगिन करना पड़ता है, राइट? ऐसा तो नहीं होता कि सबको अपना अपना यूजर अकाउंट मिला, वो अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकता है. दैट डजंट हैपन इन दिस इंफ्रास्ट्रक्चर. सो दैट इज व्हाई. एंड द प्रॉब्लम इज, अगर राहुल यहाँ पे लॉगिन कर रहा है तो इसको, अगर इसका यूजर अकाउंट यहाँ पे है तो इसको यहीं पे ही लॉगिन करना पड़ेगा. इसकी फाइल्स भी यहीं पे है, सब कुछ यहीं पे है, ठीक है. अगर कल को इस कंप्यूटर को अगर ये खराब हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, ठीक है, तो राहुल यहाँ से उठ के दूसरे कंप्यूटर पे नहीं बैठ सकता, काम नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी फाइल्स उस कंप्यूटर में थी, राइट? द सेकेंड थिंग इज, राहुल इस कंप्यूटर के अंदर जो कुछ भी कर रहा है वो राहुल को ही पता है. बाकी जो जो आईटी जो मैनेजमेंट वाले बंदे हैं उनको कुछ नहीं पता चल रहा कि राहुल इस कंप्यूटर में क्या कर रहा है, कौन सी एप्लीकेशन यूज कर रहा है, उनको ट्रेस नहीं किया जा सकता, राइट? सो दैट इज अ प्रॉब्लम. और जो दूसरे कंप्यूटर के ऊपर जो बंदा बैठा होगा, जो भी होगा, वो भी सेम, उसको उसके साथ भी सेम प्रॉब्लम फेस होंगी. So that is why this is called unorganized infrastructure, and this is not used with companies. क्यों? अगर राहुल कल को ये डेटा चुरा के लेके जाता है, अगर वो कंपनी छोड़ देता है, ठीक है, अगर वो डेटा लेके चला जाता है, तो आपके पास जितना उसने काम किया था वो, अगर मान लो कल राहुल को कंपनी से कुछ दिक्कत हो गई और उसने कंपनी छोड़ दी और उसने जाते जाते अपनी सारी फाइलें डिलीट कर दी, फिर कंपनी ने तो उसको जो वो जॉब दी थी, लेकिन वो सारे का सारा जितना उसने काम किया था वो सारा डिलीट करके चला गया. इज इट गुड फॉर अ कंपनी? नो. दूसरा, इस डेटा का बैकअप लेना बहुत मुश्किल है, ठीक है. सो दिस इज द प्रॉब्लम विद दिस इंफ्रास्ट्रक्चर. सो व्हाट इज द सोल्यूशन? अब सोल्यूशन की बात करते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है. सो द सोल्यूशन इज टू ऑर्गेनाइज दिस इंफ्रास्ट्रक्चर यूजिंग सर्वर्स. So this is our second type of infrastructure, and we call it organized infrastructure, or it is also known as server client model. Remember, this is server client model. So in this scenario, there will be servers and there will be clients. So the servers will be the devices which provides sort of services, and the clients will be the devices which will be actually getting the services from these servers, right? तो बोलने का मतलब क्या है, इस इंफ्रास्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे हैं, सर्वर एंड क्लाइंट मॉडल और ऑर्गेनाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर. तो इसमें एक साइड पे हमारे पास सर्वर्स हैं, दूसरी साइड पे क्लाइंट्स हैं. तो ये सर्वर और क्लाइंट्स क्या हैं, और इस इंफ्रास्ट्रक्चर का दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या डिफरेंस है, या ये कितना बेटर है. सो लेट्स अंडरस्टैंड इट. सी, I have same internet connection, I have same firewall configured, I have same switch configured, I have same Wi-Fi access point.
configured. I have same sort of desktops, laptops, and all things, but I have added additional thing, and that additional things are these servers. So if you look at these servers are basically different, uh, the servers which will be holding different rules. So the first server is Active Directory or domain controller. While we are learning MCSA, the primary focus remains with Active Directory and domain management, right? So this is something we are going to learn, how to build this server and how to manage this. Second type of server I have is a file server, right? This is again a part of MCSA. Email server, or you can have internet information or web servers or application server or different sort of server you can deploy in your environment, right? That either that fall under MCSA or that is a separate servers, maybe database server which holds SQL data, right? Or application server which holds some applications. So these are different servers, but all those servers will be on the same network, and at any point they those servers will be running some Windows server environment, most of them. I will tell you how much Windows Server is important in our next in next slide, right? So right now, what is the benefit of it? See this thing at the bottom, it's similar to the thing which we discussed in the previous slide, but what is difference in this? We have one server called domain controller. So this domain controller actually holds all the information about users, groups, their permissions, what kind of permissions or what kind of task a user can do on his system, whether he can install the application or he cannot install the application, or where he can log in or where he cannot log in, all those stuff known as the control power, and that information will be stored in this server. So let's say, take an Satish, example. just sorry to Yeah. interrupt you. Mhm. So guys, I'll be taking CCN at 10 p.m. on the same Zoom ID. Okay, so Satish, I have another class. I'll join this class 10 p.m. So you can close this by 9:30, I think, right? Yeah, yeah, okay. Yeah. So guys, after 9:30, you can take a half an hour break, and we will see you at 10 p.m. And if you are watching me on this YouTube, so we will have the separate YouTube session live. Okay, not do not come see for season in the same YouTube, but the Zoom ID will be same. Okay. Additionally, Satish, just explain them the content what we are going to teach during Okay, this 2 months. exactly, exactly. I Okay. will do that. And guys, you can see the numbers and WhatsApp numbers on our screen. You can contact them maybe tomorrow. You can take a screenshot of our these numbers, and all the information also mentioned in the description below. Thank you. Thank you, Satish. One more, one thing I would like to know. So do I have to, stop the Yeah, recording just you after this? can click on the stop live stream after the session. They Okay, can join back for CCNA at 10 p.m. IST. okay, sure, Okay, sure, thank sure. you. All right. All right, so let's come back to the topic. So as I said, let's take an example of the same user, Rahul, right? So in the previous slide, I said if Rahul has user account in this computer, he cannot log into any other computer. But in this scenario, Rahul doesn't have any account in any of these computers. All these computers are managed by this server, which is known as domain controller. And all the users, let's say Rahul, Ravi, right? Then some says like Sashi, or there are many users. All those users accounts will be in this domain controller, right? So next time if Rahul wants to log in this computer, he will enter his username and password. Now this computer will call this server and will ask, is the username and password correct? So it will verify that and will allow Rahul to log into this computer. And if Rahul has saved his files in this file server, right? Let's say he created any folder.
and he saved it in this file server. So now he can access that files in this machine and he can continue to work. Next day, let's say someone else is using this computer, or this computer is broken, or it's not working. So what Rahul can do, he can log into any other computer. Maybe he can take this laptop to some other place and he can sit on different bench and he can start using the same thing using this laptop, right? Now what he need to do, he needs to log in with the same credentials and he will be allowed to access all his files and resources. So let's say he saved any files in this file server, those files will be available in this computer as well. So that is called organized infrastructure. And another thing, the admin, like the people who are MCSA certified or the people who are actually going to learn these things, those people will be known as admins, right? Let's say you learn MCSA, you applied for a job for this role, so you will be known as admins, right? So now admins can control each and everything what Rahul can do on his computer. Is Rahul able to install application, or he cannot install any application, right? Is he able to access or create folder in this file server, or he cannot do that? All the things can be managed from this server centrally. Even if you have to install Windows updates on each of these computers, those all tasks can be managed from this server as well. So this is the beauty and the features of this organized infrastructure, which we call server client model, right? So let me repeat again. So basically इस infrastructure में हम क्या कर रहे हैं, सारे का सारा जो भी workload है या जो भी control है वो कहाँ से कर रहे हैं, इस centralized server से, जिसको हमने क्या बोला है, domain controller. So domain controller के पास हर एक user की information होगी, ठीक है? किस यूजर की आईडी क्या है, उसका पासवर्ड क्या है, ठीक है, उसको किस वाले फोल्डर के अंदर हमने एक्सेस दे रखी है, वो एप्लीकेशंस किसी कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर सकता है या नहीं कर सकता है, वो सारी की सारी जो सारा उसकी एक्सेस है वो हम एक जगह से कंट्रोल कर सकते हैं डोमेन कंट्रोलर से. आप जो एडमिन्स होंगे उनको इन कंप्यूटर्स पे जाके कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वो सब कुछ कहां से कर सकते हैं, इस एक सर्वर से, राइट? आई विल शो यू how that looks like. I have a lab created in my environment. I will show you, and I will show you the way how you can deploy or create the similar lab in your computer. Or if you don't have a powerful enough computer, then you will have a lab access, as Atul said. You can do the same thing in the online lab, which will be provided by networkings. All right, so let's move this. I hope this is now clear to you guys. What is the difference of a organized infrastructure and unorganized infrastructure, and what are the benefits of it, right? So let's move forward and let me show you the meaning of server and client. See, we discussed server client infrastructure. So there is one thing, as I mentioned, server and client. हमने वैसे डेफिनेशन तो पढ़ ली पिछले स्लाइड में कि सर्वर और क्लाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, राइट? या सौरभ, राहुल only log into his office premises and he can log into his outside, he like if the computer is provided by the company, he can take that computer to his home and he can do the same thing from there as well. So there will be a connection called VPN, right? So VPN will be used for Rahul to communicate with his company servers, right? Or these things are now moving to clouds. See, the difference is between clouds and on-premises is, on-premises means the servers you have deployed in your company premises. Let's say you have a building
right? This is a company building, or maybe company has rented any floors from someone or from the owner of this building. So inside that building they will be having server rooms where they will deploy their servers, their network devices, and along with that they will be having the space where the users will sit and work, right? That is called on premises environment. Means the servers you have deployed are inside your company premises. That is why it is known as on premises. Other way or the other solution is known as clouds. So it is getting more and more popular nowadays, right? So the same server which you have deployed in this, those servers will be deployed in data center provided by either Microsoft, or either it will be from Amazon, or maybe from Google. Give me a moment. I'm sorry, guys. So as I said, the cloud is nothing but the same infrastructure which will be provided by third party or the vendors. And those vendors are AWS, which is the leader, and Azure, that is the second largest company, and it is from Microsoft itself. This AWS from Amazon, right? The Amazon, Azure is from Microsoft, and there is another platform called GCP, which is from Google. Ujjwal, this recorded video will be there in the YouTube. You can search, you can go to the channel and you can find out this video on YouTube, right? Give me a moment. All right, sorry guys. So this is the three cloud platforms I said, right? So the meaning or the reason why I'm explaining this, because we need to understand the term on-prem and cloud. So anyone who wants to move to cloud, and by the way, all of us need to move to cloud in future. So if you learn all these things in on-premises environment, the same thing will be done in cloud. The difference is, in the cloud, in the on-premises environment, you have direct access to the server. You can do whatever, but in the cloud, you can actually go to the virtual machine. I will tell you what virtual machines are, and after that, you can simply manage the same the servers the same way you manage your on-premises servers, right? So this is the difference between it. So if someone has any question, let's say if I'm learning MCSA, and is it possible to move to clouds? Obviously, once you learn all these things, after you move to cloud, or you have to do the same things on cloud as well. There must be a few changes, right? The things, yeah, that you do in on premises shouldn't be, or maybe is not the same in the cloud, but they are almost similar, right? If you have the basic idea, that will be easier for you. So it's not that I am telling you, because I have experience, I have learned these things, and after that I moved, so I can manage, right? So
Now understand what is server. As I said, see, the clients will remain on premises. They will never change, or for like next 10 to 15 years, maybe 10 years, we all will be using laptops and desktops. Our tablets or mobiles are not powerful enough to handle all the workload of office environment, right? So it's a you can say that it's a alternative option that you have. Like if on the go, if you want to read your emails or want to check some files, you can do that, but the office work is right now, it is possible on computers only. So your clients will remain on premises and they need to have servers to get managed, right? So let's understand the servers. So basically server is nothing but it is a computer, or it can be a program which will be providing a services to the clients. Both of these are interdependent with each other, right? If server is there, client will get access, and if client is there, server has the reason to build. If we don't have clients, the server has no reason to deploy it, right? Let's take an example. You use Gmail or you use YouTube or all those things, right? So at the back end, you have servers running for these services. Why those servers are deployed? Because you are using those services. If no one use those services, there will be no servers at the back end, right? So that the simple term, if I take an example, the YouTube is an application, right? It is a web application and it is hosted on a machine. So that machine is known as server. All the other people, you are using a desktop, you are using a phone, you are using a tablet, or you are using whatever device to access that YouTube or application, you are known as clients. So it's as simple as that. So if I talk about different types of server, obviously if there are servers, so there will be different types of servers, right? So the servers can be domain controllers. The domain controller, as I said, the server which will be managing all the infrastructure inside a company premises, right? Other servers can be application servers. Let's say take an example of Zomato, right? So Zomato is an application running in your phone. So if you order something, how that order is getting placed? So Zomato must have some servers deployed in some area, maybe in cloud or maybe in their company premises, right? So basically you using your phone, you are accessing those servers, and after that you are getting services. So it is an example, and YouTube, it is an example, or you can have many servers. Those all the server or these types of servers are known as application servers. Second is file and storage servers. So files and storage servers are nothing but the server where you put or store your files. Let's say there is a server in your environment, and that server, let me take a different color. So in your environment there is a server, and in that server you have lots and lots of storage, maybe 10 terabytes of storage. You have 10 terabytes of hard drive in it. All right, so I'm sorry. So as I said, you have tons of amount of storage in this server, and all the users are basically accessing that server from their computer. Basically, if let's say Rahul has created his folder here, right? Now he wants to access that from any further any computer, he can access that file, maybe from his computer, maybe from his phone, or maybe from a laptop.
Ankit, see, domain controller is Active Directory servers, right? So we will understand domain controllers in detail after this, right? When we have started the Active Directory. So the domain controller is simply the Active Directory server. So the server where you install Active Directory, that server will be known as domain controllers, right? Now the next type of servers we have email servers. So what is email server? Take an example, you use Gmail, right? So Gmail is a email solution, right? You send email to someone or you get email on it, right? So that Gmail is hosted on a particular server. Hosted means you build a server, you take a server like, right? You installed Gmail application on it because it is provided by Google only. So Google know what kind of application they have deployed on their server, but they have deployed an application, and that application is known as mail application, right? So now this server is allowing you all to access your emails. You have created account and now you can send emails and you can receive email. So this server will be known as email server. So this is an example of Gmail, because Gmail is much familiar with everyone, but Gmail is not very much used in enterprise environment. If I talk about in companies, they don't use Gmail. So they use uh, different application. Most probably they will be using Office 365 or they may be using Exchange, right? So these are the most popular application in companies. No, Gmail is not an application. It's not application server. It's a email server. Okay, because Gmail is not an application. It is a mail service. It doesn't do anything for you. It's just allow you to send or receive emails. Because see, every application will have some sort of protocols associated with it. That is why that is non a particular application. So case uh, in this case basically this server will be using SMTP, right? So all the server which allows their traffic or send emails or receive emails over SMTP protocol, those servers are known as email servers. After that, we have SQL and database servers, although these are not the part, but I'm just trying to explain you what are those servers. So if you talk about any user database, let's say you create any database, any company will have their database stored in their environment, maybe their user database or any sort of related record. So that server will be known as database servers. So basically you deploy a Windows server. How database servers are created? You deploy a Windows server, right? Inside that server you install SQL server application, right? Now all the server where SQL server is installed, that becomes database servers, right? This is an example because SQL server is from Microsoft. You can have any other server, maybe MongoDB or sorry, MongoDB, or we have like MariaDB, or there are different types of database solutions we have, but SQL server is mostly common in Windows Server environment, right? Then we have print server. So every server which will be used for printing, maybe in your environment you have like 4 to 5 printers and 100 users are using those printers. It's not possible, right? If you have 100 users in your computer, is it feasible to deploy 100 printers to all of these users? No, it is not a good practice, right? So what you will do, you will select the place inside the company. You will deploy one printer for each department, or maybe two printer for each department, right? After that, those printer will be shared with users, and they can give the command from their computer, and that command will go to print servers, because print servers are the server who will be handling those printers, right? Now once print server receive the command, he will ask the printer to give the print, and after that you can go to that printer and you can take out the print, right? So that is known as
print server. After that, we have web server. So all the services, all the websites that you use, right? These websites are hosted on a particular server. So uh, इरफान डोंट वरी, मैं हिंदी में इस चीज को रिपीट करूंगा, प्लीज डोंट वरी अबाउट इट. So I'm just completing it with English first, and after that I will repeat the same thing in Hindi also, right? No, Jagreet, see, you can deploy, but there will be confliction, or there can be thousands of things that you need to check. So you cannot, in simple word, if you want to want an answer as yes or no, so my answer is no. You cannot deploy all the application or all the types of server in a single server, right? All the server will be dedicated for their tasks, right? You can mix the combination of these servers, because web server and email server can be hosted in a same server, right? This database server and application server may become a single server. You can deploy DHCP, domain controller, and DNS on a single server, or maybe print server and file server can be deployed in a single server. So you can create the combination, and that combination will be described or discussed in our later session when we try to understand most of these servers. See what all the things we will be covering in MCSA. We will cover domain controller in details. We will cover file and storage server in detail. We will cover print server. We will cover web server as IIS, right? Then we will cover DHCP and DNS server. So these servers are the part of MCSA, right? And we will discuss all of them in detail. There is another servers, or maybe different servers, known as virtualization or host, right? Hyper-V server we call it. So we will discuss that as well. So I will tell you what are the different things we will be covering in this session, right? But as of now, just try to understand this. So inside Windows Server, you have IIS, or it is known as Internet Information Servers, right? So those servers are used for web services, and in the enterprise environment, uh, it's around 60-40 ratio. So you can say 60% of website are hosted in Linux servers, right? And 40% of website are hosted in Windows servers. So in websites in environment, Linux servers has an edge, because these servers provides you much more reliability, or they don't need to be patched every month. Windows server has a frequency, or you can say that there is a necessity that you have to install patches or Windows updates each month on Windows server, and you have to reboot or restart those servers. So that is why Linux servers have edge, and the websites, most of the websites are used by Linux, and more often Linux servers are cheaper, because you don't have to provide license, or you don't have to deal with that kind of things. So most of the people prefer Linux for websites because it is cheaper option, right? So web servers, see, application servers can be Linux, but domain controllers, files and storage servers, print servers, DHCP server also can be your Linux, and DNS server can be Linux as well. But the domain controller, files and storage services, or print services, these are dedicated for Windows servers only, right? So rest remains the client. Okay, so we left with DHCP and DNS server. So DNS server is itself is a very big concept, because let's understand how internet works for your phone. Let's say you unlocked your phone. Let me just remove all these things and let me start over. So let's take an example of this phone. You have a phone, right? There is a server for YouTube. Let's say this is YouTube, right? Now this server is connected on its own network, right? There will be a separate network where this server is deployed. After that, there is a internet connection. There are many internet service provider,
and all those service providers are connected. Maybe you are using Jio, right, in your phone, and this YouTube server may be connected in Tata communications uh, internet, right? Maybe some other servers are connected some or with other internet service vendors, maybe Airtel or some others, right? Now the internet is a lot, or I would say it's a huge thing, right? How your phone knows how to find this YouTube server, where this server is located, or how to reach to this server, how your phone knows, that all information are provided by DNS servers. So the DNS server will tell your phone where to go, right? So this is the simple definition for DNS servers. Now let's understand the DHCP server. So DHCP server is nothing but it is used to assign IP addresses to devices. So if you talk about your phone, you connect your phone to Wi-Fi, or you start internet connection or data connection on your phone, and your phone starts working and start getting the internet services. Is it possible to have internet services or network services in your phone without an IP address? No, that is not possible. So how you have never configured IP addresses on your phone? So how that is configured? So that is configured because of DHCP server. So there will be some servers at the back end which will be used to provide IP addresses to the clients. So in your home, if you have a Wi-Fi router, maybe a TP-Link or D-Link router, or a router provided by Jio or Airtel, right? These routers are basically used for DHCP. They are just for the home use. In company, they are not used. In the companies, you have to use Windows Server for DHCP, or you will have large firewalls which will be used for DHCP. But the concept of DHCP remains the same. Okay, Ankit, let me repeat the same thing again. And who said Irfan? Okay, so let me repeat all the things in Hindi now. So देखो, मैंने दो चीजें बताई, एक है सर्वर और एक है क्लाइंट, ठीक है? ये दोनों जो है वो एक दूसरे के लिए काम करते हैं। सर्वर को डिप्लॉय करने का मतलब ही है क्योंकि हमारे पास क्लाइंट्स हैं उनको यूज करने वाले, ठीक है? मैंने आपको एग्जांपल दिया यूट्यूब का। अगर यूट्यूब आप लोग या हम लोग एक्सेस ना करते हो तो क्या यूट्यूब के सर्वर्स डिप्लॉय करेगा कोई? नहीं करेगा, ऑब्वियसली। क्यों पैसे खर्चेगा वो, राइट? तो YouTube अगर हम लोग यूज कर रहे हैं, जितने ज्यादा लोग इकट्ठा होकर यूज कर रहे हैं, ठीक है, उतने ही ज्यादा कंपनी को सर्वर्स भी डिप्लॉय करने पड़ते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। तो मैं बात कर रहा हूँ सर्विसेज प्रोवाइड करने की, ठीक है? तो वो सर्विस कोई भी हो सकती है। यूट्यूब में एक सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ, तो वो सर्विस कोई भी हो सकती है। तो वो जिस तरह की सर्विस है वो उस तरह का सर्वर कहलाता है। सो हमारे पास उस सर्विस के हिसाब से अलग अलग सर्वर्स हैं। जैसे मैंने बात की डोमेन कंट्रोलर, तो डोमेन कंट्रोलर का काम को क्या होता है? यूजर्स को मैनेज करना, ठीक है? यूजर्स को लॉगिन करने देना, उनके पासवर्ड्स मैनेज करना, ठीक है? उनकी एक्सेस मैनेज करना, कौन सा यूजर अपने कंप्यूटर पे लॉगिन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, कौन यूजर फाइल एक्सेस कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, ये सारी की सारी चीजें मैनेज होती है डोमेन कंट्रोलर से। इसको हम लोग एक्टिव डायरेक्टरी भी बोलते हैं, ठीक है? आप में से जो भी बंदा डोमेन कंट्रोलर को सीखेगा, ठीक है, अपने रिज्यूमे में वो ये चीज मेंशन करेगा दैट मेरे पास एक्टिव डायरेक्टरी का नॉलेज है। आप naukri.com या किसी भी जॉब पोर्टल पे जाओ, वहां पे टाइप करो एक्टिव डायरेक्टरी, आपको हजारों जॉब्स मिलेंगी। बिकॉज ये दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज है एक्टिव डायरेक्टरी। कंपनीज की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है? सो जो भी सर्वर्स जिनके अंदर एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल्ड होती है उनको क्या कहते हैं हम लोग? डोमेन कंट्रोलर्स, ठीक है? और किसी भी कंपनी में ये होते ही होते हैं, चाहे आप 100 लोगों की कंपनी होगी, 200 की, 400 की, चाहे 4000, चाहे 1 लाख, ठीक है? चाहे आप इन्फोसिस की बात करो, चाहे आप टाटा सर्विस कंसल्टेंसी सर्विसेज की बात करो, चाहे एक छोटी सी कंपनी होगी, सबको डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल करने पड़ते हैं क्योंकि उन्होंने अपना डेटा, अपने यूजर्स को मैनेज करना है, ठीक है? एप्लीकेशन सर्वर्स, कोई भी एप्लीकेशन आप डिप्लॉय करते हो तो जो एप्लीकेशन जिस सर्वर के ऊपर डिप्लॉय की जाती है वो उस एप्लीकेशन का सर्वर कहलाता है, ठीक है?
ये एप्लीकेशन सर्वर जो है वो एक जनरल टर्म है। अगर मैं जोमेटो की बात कर रहा हूँ, जैसे मैंने जोमेटो का एग्जांपल लिया, तो जो सर्वर जो वो जोमेटो की सर्विस या जोमेटो की एप्लीकेशन को चला रहा होगा वो जोमेटो का सर्वर कहलाएगा। ठीक है। अगर इसकी जगह जैसे अगर आप कोई उबर का सर्वर बताते हो तो ठीक है, अगर उबर की कोई जो उबर की एप्लीकेशन है वो जिस सर्वर पे चल रही होगी उसको हम बोलेंगे कि ये उबर की एप्लीकेशन का सर्वर है। तो जो एप्लीकेशन होती है वो उस हिसाब से उस एप्लीकेशन का सर्वर कहलाता है। अब एप्लीकेशन लाखों के हिसाब से हो सकती है, इसको कोई सिर्फ इसका सिर्फ एग्जांपल दिया जा सकता है। ठीक है, वी कैन नॉट काउंट। अब हो सकता है कल को मैं कोई एप्लीकेशन बना लूं या आप में से कोई बंदा कोई एप्लीकेशन बना ले, ठीक है, और वो होस्ट कर दे, तो वो उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन का सर्वर बन जाएगा। ठीक है। दूसरी बात करते हैं फाइल एंड स्टोरेज सर्वर्स। तो फाइल एंड स्टोरेज सर्वर का मैंने एक सिंपल एग्जांपल दिया कि आप मान के चलो आपके एनवायरनमेंट में एक आप सर्वर रखते हो और उस सर्वर के अंदर आपने बहुत सारी हार्ड ड्राइव्स लगाई हुई हैं। मे बी आपने 10 टेराबाइट की हार्ड ड्राइव लगा रही हुई है। ठीक है। अब 10 टेराबाइट जनरली हमारे कंप्यूटर्स में तो नहीं होता। तो ये 10 टेराबाइट, अब हम लोग अगर अपनी बात करें तो 10 टेराबाइट स्टोरेज हमारे लिए किसी काम की भी नहीं है। ऐसा कौन सा डेटा रखेंगे हम कि 10 टेराबाइट कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है। तो हम 10 टेराबाइट क्यों रखेंगे? किसी एक कंपनी में एक सर्वर होगा जिसके अंदर इतनी सारी स्टोरेज होगी, और ये स्टोरेज जो वो शेयर्ड होगी सभी यूजर्स के साथ। मे बी आपके कंपनी में 1000 लोग हैं, ठीक है, और 1000 के 1000 लोग अपनी फाइल्स क्रिएट करके इस सर्वर के अंदर रखते हैं। ठीक है। अब अगर इस सर्वर के अंदर रखते हैं तो वो शेयर्ड भी होगी। कोई दूसरा बंदा अगर उस फाइल को एक्सेस करना चाहेगा और अगर उसको परमिशन दे देते हैं, परमिशन कौन देगा? एक्टिव डायरेक्टरी से आप लोग। कैसे? मान लो यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट किया, ठीक है, और वो फोल्डर क्रिएट किया राहुल ने। ठीक है। कल को एक रवि नाम का बंदा आता है, वो बोलता है कि राहुल ने जो एक फाइल बनाई थी वो मुझे एक्सेस करनी है। राहुल बोलता है हाँ ठीक है एक्सेस कर लो। तो राहुल उसको खुद से नहीं एक्सेस करवा सकता, वो क्या करेगा? वो एडमिन जो होंगे, जैसे आप और मैं हैं, हम लोगों को कॉल करके बोलेगा कि रवि को मेरे जो फोल्डर है उसकी एक्सेस चाहिए, तो एक्सेस दे दो। तो आप क्या करोगे? डोमेन कंट्रोलर के अंदर जाओगे, डोमेन कंट्रोलर से रवि को उस फोल्डर की एक्सेस दे दोगे और रवि उस फोल्डर को एक्सेस कर पाएगा। अब क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा कि ये जो फाइल थी, ये तो मैंने फोल्डर जो फाइल सर्वर पे बनाया था उसको मैं मैनेज डोमेन कंट्रोलर से और कर रहा हूँ। ऑब्वियसली ऐसा ही होता है। ये जो डोमेन कंट्रोलर ये सिर्फ क्लाइंट्स को मैनेज नहीं करता, ये सर्वर्स को भी मैनेज करता है। जितने भी सर्वर्स इसके एनवायरनमेंट में होंगे वो सारे के सारे इस डोमेन कंट्रोलर से मैनेज होंगे। चाहे वो एप्लीकेशन सर्वर होगा, चाहे फाइल सर्वर होगा, डीएनएस होगा, डीएचसीपी होगा, सारे के सारे सर्वर्स को ये डोमेन कंट्रोलर ही मैनेज करता है। ठीक है। सो वी विल लर्न, इट्स रियली इंटरेस्टिंग। जब आप इसके ऊपर काम करना शुरू करोगे ये बहुत ज्यादा मजेदार कॉन्सेप्ट है। आप खुद से सर्वर्स बनाओगे, ठीक है, उनके अंदर प्रैक्टिकल्स करोगे, आप यूजर्स बनाओगे, उन यूजर्स के अंदर सेटिंग्स मैनेज करोगे, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है। सो ऑल दीज आर द डिफरेंट सर्वर। ठीक है। वेब सर्वर मैंने बताया वेबसाइट्स के लिए, प्रिंट सर्वर जो वो प्रिंटर्स के लिए, ईमेल सर्वर जो होता है वो ईमेल्स के लिए यूज होता है। ऐसा सर्वर जो आपको ईमेल सोल्यूशन प्रोवाइड करता है, जहां पे आप ईमेल सेंड कर सकते हो, अपना अकाउंट बना सकते हो, ईमेल सेंड कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो, वो होता है ईमेल सर्वर। अब मैंने आपको बात करी थी डीएनएस सर्वर। ठीक है। डीएनएस सर्वर के बिना इनमें से कोई भी चीज जो वो काम नहीं करती। इवन जो एक्टिव डायरेक्टरी का सर्वर है इसको भी डीएनएस सर्वर और डीएचसीपी सर्वर की जरूरत पड़ती है। ये दोनों दुनिया के सबसे मेन सर्वर्स हैं। इनके बगैर आप इंटरनेट के चलने की बात ही नहीं कर सकते। इंटरनेट के अंदर जो वो डोमेन कंट्रोलर्स नहीं होते हैं। ठीक है। डोमेन कंट्रोलर जो एक कंपनी के अंदर ही होगा, इंटरनेट पे उसका कोई काम नहीं है। ठीक है। इंटरनेट पे इन दोनों का काम जरूर है। डीएनएस सर्वर के बगैर आप इंटरनेट को चला ही नहीं सकते हो। मैंने आपको एग्जांपल क्या दिया? आप अपना फोन ओपन करते हो और उस फोन पे आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो। ठीक है। लेट से आपने कोई वेबसाइट ओपन करनी है अपने कॉलेज की। लेट से आपके कॉलेज की वेबसाइट है college.com या college.edu। जनरली जो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज होती हैं वो ईडीयू लगाती हैं। ठीक है। ये एक वेबसाइट है college.edu। ये जो वेबसाइट है वो किसी ना किसी सर्वर के ऊपर होस्टेड है। अब ये सर्वर किसको पता कहाँ पे लोकेटेड है ना? ये तो सिर्फ जो यूनिवर्सिटी वाले हैं सिर्फ उनको ही पता होगा, जिन्होंने वेबसाइट बनाई है उनको पता है। आप लोगों को थोड़ी ना पता है। अब आपको आपके कॉलेज वाले बोलते हैं कि हम लोगों ने रिजल्ट अनाउंस किया हुआ है, रिजल्ट जो वो कंपनी की वेबसाइट दिस college.edu पे जाओ और वहां पे चेक कर सकते हो। आप अपना फोन उठाते हो, आपने फोन के अंदर गूगल क्रोम ओपन किया और आपने टाइप किया www.college.edu, ये जो वेबसाइट है। ठीक है, या आपके कंपनी की कोई भी वेबसाइट है या आपके कॉलेज की, सॉरी। ठीक है।
अब आपके फोन को कैसे पता होगा कि ये college.com की वेबसाइट कहाँ पे है? ये तो आपको भी नहीं पता है, कैसे पता लगेगा इसको? क्योंकि college.com पे मान लो ये जो college.com का जो सर्वर है ये टाटा वालों की सर्विस यूज कर रहा है, टाटा वालों के इंटरनेट पे, और ये कहीं पे बैंगलोर में है, ठीक है। अब बैंगलोर में पता नहीं कौन सी बिल्डिंग के अंदर है, इसका आईपी एड्रेस क्या है, ठीक है, इसका नेटवर्क क्या है, किसी को नहीं पता, ये हिडन होता है नॉर्मली। अब आपके फोन ने वो सर्वर एक्सेस करना है, उसके अंदर जो रिजल्ट पड़ा हुआ है वो एक्सेस करना है, वो कैसे एक्सेस करोगे? आपके फोन को कैसे पता चल रहा है कि ये कहाँ पे है? तो वो सर्वर की वो इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है डीएनएस। तो डीएनएस क्या करेगा, हम लोगों को एक पाथ बताएगा, ठीक है। हर एक जगह पे अलग अलग डीएनएस सर्वर्स होंगे। तो आपका जो आईएसपी है, मान लो आपने जियो की सर्विस ली हुई है, आपने जियो की सिम डाली हुई है अपने फोन में, तो आपको आपका जो फोन है उसको पता है मुझे जियो के सर्वर से कनेक्ट करना है, तो वो क्या करेगा, जब आपने college.com की वेबसाइट ओपन करनी तो आप क्या, आपका जो फोन है वो किसको पूछेगा, जियो के सर्वर को, जिसने आपको इंटरनेट सर्विस दी हुई है, ठीक है। तो जियो ने क्या डिप्लॉय किया हुआ है, डीएनएस सर्वर, और कुछ नहीं है, जियो के पास क्या है, डीएनएस सर्वर है। अब जियो बोलता है मुझे तो खुद नहीं पता कि ये कहाँ पे है, तो वो क्या करेगा, इस क्वेरी को आगे फॉरवर्ड कर देगा किसी दूसरे सर्वर पे। वो दूसरा सर्वर जो वो कहीं से इंफॉर्मेशन लेके जो वो इस जो college.com का जो सर्वर है उसके पास पहुंचेगा, इसकी इंफॉर्मेशन उठा के जो है वो इस वाले सर्वर को देगा, ये वाला सर्वर जियो को देगा, जियो फिर आपको आपके फोन को दे देगा। तो आपके फोन को आप यहीं पे बैठे बैठे ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है, किसकी वजह से, डीएनएस सर्वर की वजह से। अब एक डीएनएस सर्वर नहीं, अलग अलग डीएनएस सर्वर है। जियो वालों ने अपना डीएनएस सर्वर रखा हुआ है, ठीक है, हो सकता है जियो आगे जो वो टाटा वालों से बात करे, टाटा वालों ने अपना डीएनएस सर्वर बना रखा है। टाटा वालों के बाद हो सकता है कि ये जो किसी और कंपनी का इंटरनेट यूज कर रहे हो, जो ये जहाँ पे ये सर्वर है, मे बी वो एयरटेल का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो जो वो एयरटेल वालों के पास जाएगा, एयरटेल के डीएनएस से पूछेगा। अब ये सारे के सारे रिप्लाई होने के बाद आपके मोबाइल को ये जो college.edu की वेबसाइट है वो मिल जाएगी, और आप उसके अंदर से अपना रिजल्ट निकाल सकते हो। तो देखो ये जो डीएनएस सर्वर है, अगर ये नहीं होता तो क्या आप वेबसाइट एक्सेस कर पाते? यस या नो करके मुझे चैट पे रिप्लाई करो। अगर डीएनएस सर्वर नहीं होता तो क्या आप वेबसाइट ओपन कर पाते? ऑब्वियसली वी कैन नॉट। थैंक यू एवरीवन। सो अब आप लोगों को डीएनएस सर्वर का कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि कितना इंपॉर्टेंट है ये। और ये डीएनएस सर्वर एमसीएसए का पार्ट है, इसके अंदर हम लोग डिटेल में डीएनएस पढ़ेंगे कि डीएनएस सर्वर कैसे काम करता है। ओके, थैंक यू गणेश एंड थैंक यू एवरीवन। राइट, सो so I think this is clear what different types of servers we have. See, these servers are not limited. No, Saurabh, NAS is not actually file server. This is a storage device, right? File server can act as a NAS, or NAS can act as a file server. But file server is basically where we can manage granular permission, or there are different things which we can manage. NAS can be used to, प्रोवाइड द स्टोरेज। क्या होता है कि आपने जो विंडोज सर्वर जो डिप्लॉय किया हुआ है, उस विंडोज सर्वर के अंदर जो आपने फाइल्स एंड फोल्डर बनाए, वो विंडोज सर्वर के अंदर खुद नहीं है, वो किसी ना किसी स्टोरेज डिवाइस के अंदर होगा। तो जो NAS होती है वो स्टोरेज डिवाइस होगी। तो NAS के अंदर से एक ब्लॉक जो वो इस विंडोज सर्वर को एलोकेट कर देंगे। अब विंडोज सर्वर जो कुछ भी बनाएगा वो एक्चुअल में लोगों को लगेगा कि इसके अंदर है, बट वो होगा NAS के अंदर, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ऐसा कॉम्प्लिकेटेड है। NAS के बजाय SAN आती है, ठीक है। बड़े एनवायरनमेंट में ये कंपनीज में NAS नहीं यूज होती है, पर्सनल यूज के लिए होती है। कंपनीज में SAN यूज होती है, जिसको स्टोरेज एरिया नेटवर्क बोलते हैं, ठीक है। आई विल शो यू द लैब, नो वरीज शकील। ओके, yes, Ankit, the IP address to domain name and domain name to IP resolution is a work of DNS servers, right? This is called domain name solution servers, right? So we will learn about it in detail. Okay, so let's clear it out and let's move to our next slide. So see, there is a question, and it might be a question from a lot of people from you, कि Windows Server, why Windows Server or why MCSA is important.
See, if you talk about any organization, yes, Ravi, you can share a printer without domain environment. You can. So any server which will share the printer becomes print server by default. Any computer which share a file or a folder becomes file server. Okay. बट प्रिंटर अगर आप विदाउट डोमेन एनवायरनमेंट के शेयर करते हो तो उसकी लिमिटेशन होती है कि आप उसको सिर्फ 20 लोगों के साथ ही शेयर करते हो, नॉट मोर देन दैट। ठीक है, डोमेन एनवायरनमेंट के अंदर कोई लिमिटेशन नहीं है, चाहे 1000 होंगे चाहे 1 लाख लोग होंगे, यू कैन डू दैट। ओके, बस प्रिंटर है कि वो 1 लाख लोगों की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर पाए, बट यू कैन डू दैट। ठीक है, सो नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, व्हाई एमसीएसए? मे बी मोस्ट ऑफ यू हैव दिस क्वेश्चन कि एमसीएसए ही क्यों पढ़े हम और क्यों जरूरी है। किसी भी कंपनी की बात करो, 48% of enterprise environment relies on Windows servers. 48%. It seems less, but around 52%. The rest of 52% includes everything, different flavors of Linux, Mac, or any other servers, or maybe without server environment. All that includes 52%, and rest of 48% is managed by Windows Server alone. तो जो विंडोज सर्वर पढ़ता है, ऑब्वियसली अगर आप ढंग से पढ़ते हो, जॉब मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि दुनिया भर के कंपनीज जो वो दुनिया भर की जॉब जो वो विंडोज सर्वर्स के लिए भरी पड़ी हैं। ठीक है, कोई एक बंदा कंपनी छोड़ के जाता है, वो कुछ नया सीख जाता है, ठीक है, क्लाउड सीख जाता है, मे बी तो वो क्लाउड पे मूव हो जाएगा। ठीक है, उसकी जगह कोई और बंदा आएगा। ठीक है, तो फ्रेशर्स, लेट मी टेल यू, आई स्टार्टेड एज फ्रेशर 8 years बैक, राइट? 8 साल पहले मैं भी फ्रेशर था, बट आई स्टार्टेड, then only I become experienced. आप लोग, मे बी आप लोग ऑलरेडी वर्किंग हो या आप कॉलेज स्टूडेंट्स हो और आप स्टार्ट करना चाहते हो करियर, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, टू बी ऑनेस्ट। व्हाई? अगर कॉलेज स्टूडेंट्स इसको पढ़ते हैं, इसके बाद वो डायरेक्टली जो होते हैं वो सिस्टम एडमिन्स की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी ऐसी कंपनी देख लो जो आपको फ्रेशर्स को इजीली जॉब अप्लाई करने दे रही है। ठीक है, बहुत सारी कंपनीज आपको ऐसी मिलेंगी। एक्सपीरियंस्ड में भी ट्राई कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको इंटरव्यू क्लियर करना है। एंड आई विल टेल यू हाउ टू क्लियर द इंटरव्यू, बिकॉज I am teaching you MCSA. I have given interviews with like more than 2 dozens of companies, so I know how to face the interview for Windows Server environment, right? So I will teach you. Don't worry, Ujjwal. I will share all the information when you will be requiring it. Okay? So don't worry. इंटरव्यू प्रेपरेशन साथ के साथ करेंगे। मैं हर एक लेक्चर पे, जब भी हम पढ़ते हैं, हर एक लेक्चर पे मैं हमेशा बताता रहता हूं कि कौन सा टॉपिक जो वो इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो दिस इज हाउ इंपॉर्टेंट इट इज, राइट? नाउ एक और क्वेश्चन, आप सब के सब जो है वो विंडोज कंप्यूटर यूज करते हो, किसी के पास विंडोज 7 है, किसी के पास विंडोज 10 है, किसी के पास विंडोज 8 होगी, सबके साथ विंडोज कंप्यूटर यूज करते हो, राइट? आप में से कोई बंदा है जो लिनक्स कंप्यूटर यूज करता हो अपने कंप्यूटर में, पर्सनल कंप्यूटर में? नहीं करता। मैक वाले कोई हो सकते हैं जिन्होंने मैकबुक परचेज किए, जिनके पास पैसे थोड़े ज्यादा हैं, ठीक है, वो हो सकता है कि मैकबुक्स यूज करते हो, बट मोस्ट ऑफ द मैंगो पीपल मीन्स वी नॉर्मल पीपल्स, हम सब के सब जो विंडोज कंप्यूटर यूज करने वाले हैं, हम लोगों को कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में, स्कूल्स में भी जो है वो विंडोज कंप्यूटर्स पढ़ाए जाते हैं स्टार्टिंग से। ठीक है, आप स्कूल की बात करें तो वहां से भी आपको जो वो विंडोज के अंदर ही काम करना बताया जाता है। So we all are using Windows computer, and Windows computer holds 76% of market share, right? 76% is a huge market share, guys. 76% अकेली Windows 10 और Windows 7 है, रेस्ट ऑल द अदर, चाहे उबुंटू होगा, उबुंटू जो वो लिनक्स का फ्लेवर है, ठीक है, उबुंटू के अलावा चाहे फेडोरा होगा, जो भी होंगे, चाहे मैक होगा, ठीक है, या क्रोम ओएस होगा, ये सारे के सारे मिलकर जो वो 24% भी नहीं बनाते।
अकेला विंडोज 76% बनाता है, राइट? सो इफ यू वांट टू सर्वाइव इन दिस एनवायरनमेंट एंड यू वांट टू गेट अ जॉब इजीली, विंडोज इज अ मस्ट रिक्वायरमेंट, ठीक है? सो अगेन, if you learn MCSA, most of the organizations uses Office 365 or Exchange for their email solutions. वहां पे जब आप किसी कंपनीज में बात करते हो, वहां पे वो जीमेल यूज नहीं करते हैं, दे डोंट यूज जीमेल और एनी पब्लिक मेल सर्विसेज. व्हाट दे यूज प्राइवेट ईमेल और पेड मेल सर्विसेज, और उनमें सबसे ज्यादा यूज होता है ऑफिस 365 या एक्सचेंज, राइट? और ये दोनों मिलके जो है वो बहुत बड़ा मार्केट शेयर, मोर देन 50% शेयर बनाते हैं, ठीक है? मैं मार्केट शेयर पे क्यों फोकस कर रहा हूं? बिकॉज आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ मच जॉब्स यू कैन हैव ऑन दिस फील्ड, राइट? सो अगर मैं ऑफिस 365 या एक्सचेंज की बात करता हूं, वो सारे के सारे एक्टिव डायरेक्टरी से ऑथेंटिकेटेड होते हैं, उनको एक्टिव डायरेक्टरी चाहिए, और एक्टिव डायरेक्टरी चाहिए मतलब आपको क्या चाहिए? एमसीएस से. अब बात करते हैं एज्योर की. दुनिया में सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा जो क्लाउड प्रोवाइडर है वो है एज्योर, और एज्योर किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का. तो अगेन, जो बंदा एमसीएसए पढ़ेगा उसका नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो क्या होगा? एज्योर. उसको एज्योर में सारी चीजें नहीं पढ़नी होंगी, उसको कुछ चीजें पढ़नी होंगी एज्योर में. क्यों? बेसिक चीजें उसने ऑलरेडी एमसीएसए में कवर कर रखी हैं. यूजर्स कैसे कैसे क्रिएट करने हैं, ठीक है? सर्वर्स कैसे बनाने हैं, ठीक है? यूजर्स को मैनेज कैसे करना है, ऑल द थिंग्स ही ऑलरेडी लर्नड इन एमसीएसए. what now he has to learn? How the same things can be done in Azure. That is the only difference he has to do. तो जो बंदा डायरेक्ट एज्योर पे जाता है उसको मे बी 6 मंथ या 1 साल जो वो लर्निंग पे लगे, ठीक है? जो बंदा एमसीएसए करने के बाद या एमसीएसए जॉब करने के बाद एज्योर पे जाता है, he can do in 1 month, not more than 1 month he will require, ठीक है? So that is the difference, or this is the end goal. Right now if you learn MCSA after like getting a job, your next target would be Azure. I don't tell you guys कि आप MCSA करो उसके बाद सीधा Azure कर लो. After doing MCSA and CCNA, get a job, try to work, try to get experience. After you get experience, along with your job, start learning Azure and get the certification from Azure. जहां पे जो जिसका पैकेज 2 से 3 लाख रुपए पर मंथ होगा एमसीएसए के बाद, एज्योर की सर्टिफिकेशन करने के बाद वो 6 से 7 लाख इजिली हो जाएगा. और इसके लिए आपको क्या, सिर्फ 1 या 2 साल लगेंगे बस. मीन्स अगर आप एमसीएसए के बाद 1 साल के अंदर अगर आप एज्योर की सर्टिफिकेशन करके एक्सपीरियंस गेन कर लेते हो, आफ्टर दैट यू कैन जंप एंड यू कैन गेट हायर अमाउंट ऑफ सैलरी. आपके नाम के पीछे फ्रेशर का टैग नहीं लगा होगा, ठीक है? आपको वर्किंग एक्सपीरियंस भी होगा एंड यू हैव सर्टिफिकेशन एज वेल. सो यू हैव अ ब्राइट फ्यूचर अहेड, राइट? माइक्रोसॉफ्ट की कोई मर्जी सर्टिफिकेशन कर लो, देर इज अ फिक्स प्राइस 6,000 रुपीज पर एग्जाम. एज्योर के 3 एग्जाम्स होते हैं, ठीक है? फर्स्ट एग्जाम इज नोन एज फंडामेंटल एजी 900, राइट? दिस इज द फंडामेंटल. इसके लिए आपको 6,000 देने होते हैं, ठीक है? आप इसको ना भी करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन डायरेक्टली गो फॉर एजी 104, राइट? और ये कहलाता है एज्योर एडमिन. ये भी आपको 6,000 पे ही होगा, ठीक है? एक ही एग्जाम होता है. पहले होता था एमसीएसए के लिए 3 एग्जाम्स होते थे, ठीक है? यू हैव टू पास 3 एग्जाम्स, देन ओनली यू कैन बिकम एमसीएसए. सो इसके लिए आपको 18 से 20 हजार रुपए पे करने पड़ते थे, ठीक है? अब सर्टिफिकेशन सस्ती हो गई है, लेकिन एक एक ही एग्जाम है. बट हाँ, ये मुश्किल जरूर हो चुकी हैं, ठीक है? इट्स लिटिल बिट हार्डर. अगर आपको एमसीएसए नहीं पता है, सो यू विल फेस चैलेंजेस टू गेट दिस सर्टिफिकेशन, राइट? क्योंकि वो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, और अगर वो सिनेरियोज में आप फंस गए और उसके अंदर सिर्फ आपको आपके पास ऑप्शन होता है कि आपको 80% मार्क्स जो लेके आने होते हैं. इफ यू डोंट गेट दैट, योर 6,000 रुपीज विल बी वेस्टेड. So that is why get experience and after that go for this certification. Okay. So this is the future as well. So
you can say what will be your future after getting this MCS and all, right? So this is the future. Okay, so let's clear this drawing and let's move to our next thing, which is the agenda, that what we are going to learn in MCSA. So this is the basic things which you need to make sure. You can take the screenshot right now, right? So all of you can take the screenshot and it will cover all the things. This is basically the topics which we will be learning in detail, right? So when in Windows Server, we will start with Windows Server Network Fundamentals, right? 3 exams होते थे. This is for first exam, which says Network Fundamental. This is for Active Directory. See, Active Directory का इतना बड़ा part होता है, ठीक है? This all comes under Windows Active Directory environment. So Active Directory is the main focus, right? Because Active Directory आपको हर जगह काम आएगी. ठीक है, आप बाकी चीजें पढ़ो ना पढ़ो, अगर आप एक्टिव डायरेक्टरी अकेली और डीएनएस और डीएचसीपी पढ़ते हो, दैट इज मोर देन इनफ आपको जॉब के लिए. ठीक है, सो फर्स्ट विंडोज सर्वर नेटवर्क फंडामेंटल्स में वी विल कवर DHCP server. We will do practical labs. What are the different scenarios to deploy DHCP servers, right? After that we will learn remote and routing and remote services, right? जो विंडोज सर्वर होता है वो स्टैटिक राउटर बन सकता है in case you don't have a routers in your environment. Windows 10 में स्क्रीनशॉट के लिए you can search for, let me show you how to take a screenshot. If you guys don't know how to take a screenshot in Windows, let me show you. Just type snip in your, click on this, type snip, right? चाहे आपके पास Windows 10 होगी, Windows 8 होगी, Windows 7 होगी, जो भी होगे, ये स्निपिंग टूल निकलता है, ठीक है? Just open it. Now click on this new. Let me just close this because it won't allow me. Click on this new and after that you can take a screenshot like this. बस जितना एरिया आपको चाहिए उतना आपने क्लिक कर लिया and you can save this as a file. Okay, so this is how you take screenshot. All right, there is another way. You can use print screen button from your keyboard, but for that you have to copy that before you copy something else. आपको वो पेंट में या किसी चीज में कॉपी करना पड़ सकता है. स्निपिंग टूल में आप स्निप लेते हो, जस्ट उसको सेव कर दो. दैट इज ऑल यू नीड टू डू, राइट? सो लेट्स गेट बैक टू अवर टॉपिक. So I was discussing about this DHCP, DNS and VPN, all the things we will learn within remote and routing and remote access. After that we will learn about DNS server and how DNS server works, what are the different zones, what are domains, what are hierarchies, all these things we will learn in DNS servers, right? After that we will learn about identity. The second topic will cover Active Directory in domain in detail. So in Active Directory we will learn about Active Directory domain services. We'll start with introduction and what is it actually, how to install it, how to install a domain controller, how to create or join domain computers in domain, how to create sites, domains, trees, forest, how to work with replication, how to create trust relationship, all these things. After that, how to create users, groups, organizational units, how to manage logins of users, all these things you will be getting here. Don't worry guys, I will share my LinkedIn profile with you in this chat room after this. Okay, so I will share it. Yeah, Jagreet, see, PowerShell is not something that is a separate topic. The PowerShell is just a tool. That tool will be used to manage the same things. So either you do with graphical user interface or do that with PowerShell. So in this topic or in this session, what we will be doing, I will be just showing you how to do this in graphical user interface. And the same thing, I will share the PowerShell command as well, कि आप एक PowerShell command इसके लिए रन कर सकते हो और ये काम जो वो सेम PowerShell से हो सकता है, ठीक है? So PowerShell is something, if you want to learn, this is just about the practice, how much practice you do on PowerShell. Because कमांड प्रॉम्प्ट के जैसे जैसे आप कमांड प्रॉम्प्ट यूज करते हो, ठीक है, आपको कमांड्स याद रखनी पड़ती हैं. सेम गोज विद PowerShell. Okay, all right. So then group policy management, we will understand how to manage the groups,
हाउ टू मैनेज पॉलिसीज। किसी के कंप्यूटर पे आपने मान लो वॉलपेपर सेट करना है पूरे ऑर्गेनाइजेशन में कि सबके सबके कंप्यूटर पे एक ही वॉलपेपर हो, ठीक है, इस तरह की चीजें आपने करनी है। सो दैट ऑल फॉल्स अंडर ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट, ठीक है। देर आर different of group policies, maybe 1500 different type of policies we have in Windows Server environment, right? So all this will be covered in, I mean, I won't tell you that कि हम 1500 से 1500 ही करेंगे, but I will tell you the basics and I will tell you how to apply the group policy, and after that you can search what type of policy you want to deploy, और आपके पास इतनी capabilities हो जाएंगी कि आप कोई भी policies जो वो deploy कर पाओगे, right? After that, print and file server. So we will understand the print and file server in detail, and there is another topic called distributed file system, right? We will understand this as well. After that we will understand remote desktop services. So पहले इसको जो वो टर्मिनल सर्वर भी बोलते होते थे, ठीक है। अगर आपको किसी इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आपने टर्मिनल सर्वर्स के ऊपर काम करा है, सो टर्मिनल सर्वर का एडवांस्ड जो वर्जन है वो है रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज और आरडीएस, राइट। टर्मिनल सर्वर्स में बहुत सारी लिमिटेशंस थी, ठीक है। आरडीएस के अंदर कोई लिमिटेशंस नहीं है, इट इज अ वेरी वेरी एडवांस टूल, ठीक है। एंड यू विल सी दिस सर्वर डिप्लॉयड इन मैनी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे उनके पास एक्टिव डायरेक्टरी हो चाहे उनके पास एक्टिव डायरेक्टरी ना हो, आरडीएस बहुत सारे लोग यूज करते हैं, ठीक है। किसी ने अगर सिट्रिक्स के बारे में सुना होगा, सिट्रिक्स भी जो है वो आरडीएस सर्विसेज को यूज करके ही काम करता है, ठीक है। सो सी सिट्रिक्स के अंदर भी विंडोज सर्वर आपको चाहिए। अगर कोई बंदा सिट्रिक्स भी पढ़ना चाहता है, he has to learn विंडोज सर्वर्स और दिस एमसीएसए। सिट्रिक्स तो सिर्फ मैनेज करने का तरीका है, लेकिन एट द एंड मैनेज क्या करना है, विंडोज सर्वर, और वो कैसे मैनेज होगा अगर आप एमसीएसए सीखते हो। Then we will learn about infrastructure management. So in infrastructure management, we will learn Hyper-V, and we will understand what is the virtualization, what are virtual machines, how to create virtual machine, all those things, right? After that, we will learn about web services. In this, we will do something. We will create a dummy website, and we will host that website in our environment. So you will have a good understanding कि आप अपने एनवायरमेंट में एक छोटी सी वेबसाइट होस्ट कैसे कर सकते हो विंडोज सर्वर पे, ठीक है। सेम यू कैन डू विद विंडोज 10 एज वेल, आप विंडोज 10 के साथ भी कर सकते हो, द प्रोसेस विल रिमेन सेम, राइट। उसके बाद हम विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विसेज पढ़ेंगे, डब्ल्यूडीएस। विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्वर इज लाइक आपने एक सर्वर बना के रखा हुआ, इस सर्वर को हमने बोल दिया डब्ल्यूडीएस, ठीक है। इस सर्वर के अंदर हम लोगों ने विंडोज 10, विंडोज 8, विंडोज सर्वर, ये सारे के सारी इमेजेस रखी होती हैं। अब कोई भी जो विंडोज की मशीन है, ठीक है, कल को मान लो एक नया कंप्यूटर लेके आते हो आप अपनी कंपनी में, इस कंप्यूटर को आप कैसे करोगे, इस कंप्यूटर को इंटरनेट पे जो नेटवर्क पे जोड़ोगे, ठीक है। नेटवर्क पे जोड़ने के बाद जैसे इसको आप पावर ऑन करोगे, क्योंकि जब आप मशीन लेके आते हो, खाली मशीन लेके आते हो मार्केट से, ठीक है, उसके अंदर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता इंस्टॉल, वो खाली होती है, आपको विंडोज इंस्टॉल करनी पड़ती है। तो हम लोग इसमें विंडोज हम नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, विंडोज सर्वर के साथ इसको कनेक्ट करेंगे। सिर्फ आपने इसको नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना है, केबल लगाई, केबल लगाने के बाद इसको ऑन किया, इसमें विंडोज खुद ही इंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है। दैट इज डन थ्रू विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्वर्स। नेक्स्ट इज विंडोज सर्वर अपडेट सर्विसेज, ठीक है। अगर आपकी कंपनी में मान लो 1000 कंप्यूटर्स हैं और उन सब के सब कंप्यूटर्स में विंडोज अपडेट होंगी किसी मंथ पे, ठीक है, हर मंथ होती है, और हर मंथ में मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल बी सेकेंड वीक और मे बी थर्ड वीक, ठीक है। जनरली थर्ड वीक जो वो ज्यादा लोग जो प्रेफर करते हैं, बिकॉज उस टाइम तक हमारे पास स्टेबल अपडेट्स होती हैं। तो थर्ड वीक में जो वो सारे के सारे कंप्यूटर्स में विंडोज अपडेट इंस्टॉल होंगे, जितने भी कंप्यूटर्स हैं। अब अगर एक विंडोज अपडेट मान के चलो 100 MB की भी है, ठीक है, तो कैलकुलेट करो 1000 कंप्यूटर सारे के सारे 100 MB की अपडेट डाउनलोड करेंगे तो कितना डेटा कंज्यूम होगा, है ना। तो वो हम ऐसा कंपनी में नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक सर्वर डिप्लॉय करते हैं अपनी कंपनी के अंदर। ये सर्वर जो वो माइक्रोसॉफ्ट से अपडेट डाउनलोड करता है, तो ये सिर्फ 100 MB की ही अपडेट डाउनलोड करेगा, और इसके बाद ये कंप्यूटर जो ये जो सर्वर है अपने अंदर के जितने भी कंप्यूटर है उन सब के अंदर जो वो विंडोज अपडेट डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। अब मुझे पैसे जो देने होते हैं वो इंटरनेट के लिए देने होते हैं, जो मेरा इंटरनल नेटवर्क है उसके लिए थोड़ी ना पैसे देने पड़ते हैं, राइट। तो मुझे सिर्फ 100 MB डेटा ही यूज होगा इंटरनेट पे, बाकी सारे का सारा डेटा
इंटरनल नेटवर्क पे होगा। और इसका दूसरा फायदा ये होगा कि ये जो सारे के सारे कंप्यूटर्स हैं वो लोकली कनेक्टेड होंगे, इनके अंदर जो अपडेट्स हैं वो जल्दी डाउनलोड हो जाएंगे और जल्दी इंस्टॉल हो जाएंगे, राइट। सबको इंटरनेट पे कनेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब कनेक्ट है करेंगे, अगर आप इंटरनेट पे अगर आप 1 MBPS की डाउनलोड भी करते हो तो भी आपको 100 MB डाउनलोड करने के लिए कितना टाइम लगेगा, राइट। लेकिन अगर आपके पास ये सर्वर है, ये सर्वर 1 Gbps नेट पे चल रहा है, तो ये 100 MB की अपडेट जो वो 2 या 3 मिनट में डाउनलोड होके इंस्टॉल भी हो जाएगी। सो दैट इज हाउ फास्ट WSUS इज। और ये हम लोग जो वो इसके अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द टूल्स एंड द डेली वर्क्स ऑफ अ विंडोज एडमिन। ये इन दोनों चीजों के अंदर माइग्रेशन हम पढ़ेंगे कि विंडोज सर्वर को माइग्रेट कैसे किया जाता है। लेट्स से अभी जो वो 2019 चल रहा है, नेक्स्ट ईयर 2022 आ जाएगा, ठीक है। कुछ एक एनवायरनमेंट में ऑलरेडी 2016 या 2012 R2 चल रहा है, ये पुराने सर्वर्स हैं, ठीक है। अब इन सर्वर्स को अपग्रेड करना पड़ेगा क्योंकि जो 2016 है ये आने वाले 4 साल में एक्सपायर हो जाएगा। विंडोज 2012 R2 जो है वो 2023 में एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। 2023 के पहले पहले हमें विंडोज सर्वर 2012 R2 को माइग्रेट करना पड़ेगा। अब ये लोग या तो विंडोज सर्वर 2019 पे आएंगे या 2022 पे आएंगे। तो ये जो अपग्रेड एक ऑपरेटिंग सिस्टम से दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे जाने के प्रोसेस को कहते हैं माइग्रेशन, राइट। तो ये सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे माइग्रेशन एंड अपग्रेड्स में। आफ्टर दैट वी विल अंडरस्टैंड द डिस्क मैनेजमेंट, रेड क्या होती है, इवेंट व्यूअर क्या होता है, टास्क मैनेजर्स क्या होते हैं, ठीक है। इनके अंदर काम कैसे किया जाता है, विंडोज सर्वर्स को मैनेज कैसे किया जाता है। ऑल दिस थिंग्स विल बी कवर्ड इन दिस टॉपिक। और जब हम लोग ये सारी की सारी चीजें पढ़ रहे होंगे, साथ के साथ मैं ये चीज आपको साथ में बताता रहूंगा कि आपको डेली क्या करना होता है, ठीक है। अगर आप WSUS पढ़ोगे तो मैं आपको बताऊंगा कि आप विंडोज अपडेट कब इंस्टॉल करते हो, आपको विंडोज अपडेट इंस्टॉल करने से पहले क्या करना पड़ता है, क्या नहीं करना पड़ता है, ठीक है। एक्टिव डायरेक्टरी में हम लोग डेली क्या करते हैं, कब आपके पास किस तरह का काम आएगा, मतलब डेली टास्क जो होते हैं, दैट वी विल डिस्कस इन this session along with these topics, right? So I try to make my sessions interactive कि जहां पे हम लोग mutually discuss करते हैं हर चीज को, ठीक है। If you have any question, we will have a separate like 15 to 20 minutes discussion session every day. Along with that, you will have a discussion portal provided by Networkings, जहां पे आप जो अपने questions पूछ सकते हो and you can um, get the answer, right? So let me clear this, and at the end it's more than 9:30 now. So let me give you a quick look of my lab which I have created in VMware Workstation, right? So I have created VMware Workstation lab. Let me show you if you can see my screen, right? So this is the VMware Workstation where I have installed, you see how many servers I have. I have 1, 2, 3, 4 servers and 1 client machine I have here. Amit, Windows 11 is not available as of now, right? Microsoft has not officially introduced it, right? So let me show you this. So let's power on 1 server and 1 client machine at the same time. Okay, so just a quick look. Okay, so this is Windows 10 machine and this is Windows Server 2019. Windows Server takes a little bit time. Subhash, NLB is not part of it, but we will understand or will be discussing about failover clustering. Yeah, you can use Hyper-V, but as of now, I'm using VMware Workstation for this lab. So if you are comfortable with Hyper-V, you can do that. See, अगर आप इसको देखोगे, so Windows 10 machine and Windows Server looks same, right? But they are not same. One is client machine and one is your Windows Server machine, right?
So let's say I have created one user here. Let me just log into it. This machine is created for one of my batch who is actually um with me, learning from me. They are just a few topics remaining for them, right? So this is the Windows 10 client machine, and this machine I have created inside VMware Workstation. So I'm not going to do all the practicals or mess up with my machine, or everything we will be doing inside this lab, right? So in this Windows server, you have this Windows server, right? Now you can log into it and you can see how Windows server looks like. This is the Active Directory server, or I can say domain controller, right? So this is Windows Server 2019. This is the latest version of Windows Server available as of now. Maybe in 2022 you will have Windows Server 2022, as I have heard, right? So Amit, the configuration of these servers are not very much high. Windows Server is with 2.5 GB of RAM, and this Windows 10 client machine is running on 3 GB of RAM. So if you have 8 GB of RAM in your machine, that is enough. And guys, if you don't have that much of RAM, don't worry, you will have access to networking lab. You can do there as well. नेटवर्किंग लैब्स जो मैं बता रहा हूँ वो बेसिकली ब्राउजर बेस्ड है, ठीक है. इट्स लिटिल बिट कि अगर आप उस मशीन को रीस्टार्ट करते हो, उसमें कंट्रोलर डिलीट करना, ये सारी चीजें जो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, बिकॉज इट्स अ ब्राउजर फीचर ऑल दो, राइट. और अगर आप अपने एनवायरनमेंट में तो जब मर्जी जो मर्जी मशीन बनाओ, आप डिलीट करो, आपका अपना कंप्यूटर जैसे मर्जी. सो यू हैव बोथ ऑप्शंस. अगर आपके पास कंप्यूटर अच्छा है, आई विल टेल यू हाउ टू डिप्लॉय दिस. अगर आपके पास कंप्यूटर अच्छा नहीं है, स्टिल यू हैव ऑप्शन टू डू द प्रैक्टिकल्स, राइट. ऐसा नहीं कि आप प्रैक्टिकल्स नहीं कर सकते अगर आपके पास कंप्यूटर अच्छा नहीं है तो. यू कैन डू दैट. So this is our Windows server I was showing you. So let me show you how Active Directory looks like. So this is the Active Directory, right? So this is your Active Directory users and computer. You can see I have created different departments, and each department is having users created on it, right? So we can create more users. I will tell you how to create these users, and along with that we will create groups as well. If you see, I may have created a group. No, I haven't created a group here, right? So you will have groups here. You can just go to this users, you have groups created here, right? All these things, ये क्या है, ये कैसे क्रिएट होते हैं, किसका क्या मतलब है, किसका क्या काम है, ये सारी की सारी चीजें हम एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर सीखते हैं. So this is my Active Directory server. Along with that, we have file server as well, right? So file server is not powered on yet. So everything we will be doing in this MCSA RAB, right? Shakil, if you have 4 GB of RAM, please contact with your company. जिसका भी आपका लैपटॉप है, ठीक है. डिपेंड्स कि कौन सी जनरेशन का लैपटॉप है, उसके अंदर कौन सी रैम है, DDR3 है, DDR4 है, या DDR2 तो नहीं है कहीं पे, ठीक है. सो DDR2 तो बहुत पहले यूज होती थी, सदियों जमाने पहले. ओके, 10th जनरेशन, सो इट विल बी DDR4. ओके, सो या DDR4 यू कैन गो, मेक श्योर दैट यू यूज सेम फ्रीक्वेंसी ऑफ रैम, ठीक है. 10th जनरेशन प्रोसेसर है, सो इधर यू कैन गो फॉर 2600. बट जो पहले ऑलरेडी जो रैम लगी हुई है लैपटॉप में, सेम उसी ही तरह की रैम आप परचेज करना, ठीक है. आप 8 GB रैम अलग से डलवा सकते हो या 4 GB भी डलवा सकते हो, दैट्स अप टू यू, ठीक है. कुछ जो लैपटॉप्स होते हैं जनरली 10th जनरेशन में तो ये इश्यूज नहीं आना चाहिए, ठीक है. So 8 GB will be enough. Yeah, if you get the 8 GB, you will have 12 GB of RAM, and that is more than enough for this lab. Okay. With 12 GB of RAM, you can create 3 machines, 2 server and 1 client machine. Anything guys, you can use HP, Dell, whatever, right? Processor और RAM matter करता है, HP, Dell नहीं matter करता. अगर RAM की बात कर रहे हो तो HP RAM नहीं बनाता है. RAM तो आपको किंगस्टन, कोर्सेर, कोरूशल यही बना के देंगे. HP वाले तो सिर्फ स्टिकर लगाते हैं अपना, ठीक है.
Okay, so that is it for today, guys. I hope this is our a good session, and if you might have uh, seen it as interesting, and yeah, let's stop for today. So you have like 15 minutes time, so let's take a break of 15 minutes, and after that you can join at 10 p.m. using the same Zoom ID, and Atul will be there, who will be taking session on CCNA, right? All right, thank you very much. Thank you all for joining today, and I hope we will join tomorrow as well, and we'll discuss more on that. Okay. All right, so let me